गिरता था। अरे Yeah. Okay. Řekni ahoj. Ahoj. Řekni čau. Řekni čau. आज है ना भाई का लफड़ा करने का मन है क्या, जिसकी भी गांड में दमे आ गया है। लफड़ा करना है बोला, 100 के छुट्टे नहीं दे रहा हूं जो सब आ रहे हो। एक एक करके आओ, बहन के लौड़ो, चीटिंग नहीं, एक एक करके। क्या नाम है तेरा? सोनम गुप्ता। सोनम गुप्ता बेवफा है। विमल पान मसाला निकला। मैंने बोला सोनम गुप्ता खफा है, बेवफा नहीं बोला। बहन की बहरी लोड़ी। बस अभी कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ए चौधू भगत क्या देख रहा है, चला जा बाहर, चल लड़ते चल। चौधू क्या बोला, इतना बड़ा हो गया। चल आज भाई का लड़ने का मूड नहीं है, चले कॉम्प्लेन बॉय बैठ जा, चल। किसी और को देखता है मैं, चल। कह रहे ए बूढ़ी गांड क्या देख रहा है, चल इधर आ, चल। अरे अंकल आपको नहीं बोला मैंने, पीछे एक बुड्ढा खड़ा था, उसको बोला भाग गया हो, जाने दो, रहने दो। ए तू छोटे गांड में तो मैं तुम्हारा बहन के लोड़ो, जॉन अब्राहम खा के पैदा हुए थे क्या? Just kidding. Yay, Minecraft. I like Minecraft. And when I play Minecraft, I'm happy. Oh, I play Minecraft. Die, you stupid zombie. Yay, I got a dirt. What the freak? Why are there so many zombies? There's too many zombies. Hi, sorry, halfway through making this video my mic just broke for itself, so now I have to use this stupid robot. So sorry if this video is trash. Best TNT just. अगर आप लोग तो बताइए, आप लोग हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. I can't hear you. Yes, sir. I still can't hear you. Yes, sir. If you lose game, you must eat Jif. I am not gonna lose this. I'm actually gonna be so sweaty. By sweaty, I mean going over here and just what? No. So are you guys ready? Yes. Okay. No. So मैं हूँ आपका Yes. host, It's just one more रोहित guy. शेट्टी। It's just one more guy. Okay, wait, I can do this. Good morning, नहीं रोहित शेट्टी, ठीक है? Oh my hi. तो आप में से कोई ऐसा है जिसे सांप, बिच्छू, नेवला, खरगोशा या मौत से डर नहीं will लगता? not eat Jif. No. Oh, okay. All right then. आप How did सबका you सफर meet यहीं खत्म Eggshells? होता है, आप लोग जा Okay, सकते हैं। so if you don't already know who Eggshells is, जब डर नहीं he's लगता तो जहाँ basically चूतिए हैं जो यहाँ this शो kid चला रहे that- आप तीनों का स्वागत है हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक शो वेटरों के खिलाड़ी सीजन 203 एपिसोड 413। अगले टास्क का नाम कौन मुंह में लेगा मेरा। So I was just in TeamSpeak one day and then I met him and it turns out he सिगरेट actually आपको knew मुंह में who I लेनी है was, which is why और he's दो getting कश so लगाने। mad. Oh yeah, and it turns out he has a channel as well, so subscribe to him. And then I ended up making like 3 videos off of चल it. मोटे। And then the reason I brought it up is चल। because I actually found this अरे channel. पूरा सुन, आपका सरप्राइज ये है कि आपको ये सिगरेट जलानी है और अपने बाप के सामने जाके Basically, I uploaded it for like an दो कश hour. लेके I आना। felt really bad at the time because he knew exactly what he was doing. पापा। And it worked. So if you ever want to see the life video, see something stupid like, I don't know, बताइए, 15,000 likes आप में or से whatever कौन comes आएगा out, सबसे then पहले I'll ये release टास्क it and हाँ? Skeppy versus मैं hardcore कहूँगा जो मोटा Minecraft. हो जाएगा जो पतला है सबसे हो जाएगा। टिप टॉप कर ले। क्या समर कैंप चला क्या मैंने यहाँ पे ऐसे डिसाइड करो कि बच्चों की तरह क्या समर कैंप। एक काम करो पुकम पुकाई मिले मिले से राजा जो ना मिले से चोर बजरी जाएगा। ठीक है बद्री, तो आपके पास
30 मिनट है ये टास्क पूरा करने का। आपका समय शुरू Play होता है another horror map. काफी डर लग रहा है। Unbanjif. No excuses. देखते हैं क्या होता है। Jeff, I swear to God, if you join my server. Whoever builds the best house, they get God ring. Cyro's the judge. Pyro, that's so unfair. How about the whole server? Okay, fine, how about the whole server? पापा I didn't announce it. क्या We लाइफ have nothing. तो मोटा हमारे बीच नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि ये सारे स्टंट एक्सपर्ट और अजय देवगन की देखरेख में किए जाते हैं, इसीलिए प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। तो एक बात तो साफ हो गई कि भले ही शेर, चीता और सांप से लड़ते हुए आप बच जाएं, लेकिन बाप से भिड़ंत में आपकी मौत तय है। सर मौत अगर तय है तो कुछ और टास्क कर लें। नहीं, आपके पास 30 मिनट है ये टास्क कंप्लीट करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। काफी डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? क्या? पापा मुझे पता चल गया पापा। क्या पता चल गया? It's a theory that's been passed through the generations since the Empire State first became the world's tallest building back on March 31st, 1931. It's said that if you make it all the way up the building's 1,860 steps and stand a whopping 102 stories above the New York sidewalk, all you'd have to do to kill the pedestrians on the street below is drop a penny. The idea is that even a tiny object, like a coin, can gather enough speed when dropped from a sufficiently great height that it effectively turns into a bullet, splitting open the head of anyone unfortunate enough to be standing underneath. डर लग रहा था बीच में। सर तो आइए आगे बढ़ते हैं। But exactly how true is this? Could the insignificant act of letting a single coin fall from a great height carry a murder charge? I'm Stu, this is Debunked. We're here to sort the truth from the myths and the facts from the misconceptions. फांसी में ये छुट्टी है। So, how fast would this hypothetical penny be falling when it hit some unsuspecting hypothetical tourist on their hypothetical noggin? Well, since we're atop the Empire State Building in this curious caper, let's assume that the penny we're dropping is a standard American 1-cent coin. Now, around here is where we hit our first problem. The fundamental problem with this concept is that it assumes the penny will continue to gather speed for much longer than it actually would. In reality, falling objects can only move so fast. This is all because Earth is encased in a cozy layer of gases known as the atmosphere. The portion we're concerned with is actually called the troposphere, the lowest region that's closest to the ground. Everything moving around on the Earth's surface has to move through it, and as a result, will encounter air resistance. क्या लाइफ है। As the force of gravity pulls the penny faster and faster towards the ground, the amount of air resistance increases. Eventually, the accelerating forces will be balanced out by the air resistance, meaning the penny won't be able to go any faster. It will have reached its maximum speed, also known as its terminal velocity. A penny reaches its terminal velocity after falling a mere 15 meters, which is only slightly taller than the letters in the Hollywood sign. This means that a penny falling from any height exceeding 15 meters will hit the ground at the same speed. The more astute among you will have realized that the Empire State Building is, in fact, taller than 15 meters, standing proudly at an impressive 443 meters, or 1,454 feet. Considering the fact that the 5th floor of the Empire State Building stands at around 22 meters, dropping the penny from the observation deck on either the 86th or 102nd floor is simply a waste of time and money, since a ticket to the observation deck will set you back $34. A standard American 1-cent coin weighs in at 2.5 grams.
A penny of this weight, when dropped from a distance of over 15 meters, will reach the blistering speed of around 40 kilometers per hour, or 25 miles per hour. This isn't even close to fast enough to kill someone, or even harm them very much at all. It might sting a little, but you'd certainly live to bore everyone with the story of how you got hit by a penny while walking past the Empire State Building on your Sex and the City tour. What the bloody hell was that? Oh, penny. Part of the reason for this is that pennies are hopelessly unaerodynamic. They are flat, light metal discs, so they encounter a lot of air resistance, causing them to move and spin erratically, which significantly slows their descent. Furthermore, all of these calculations are made on the assumption of entirely unrealistic, perfect weather conditions, and don't take into account the likely effects that wind will have on the coin. Indeed, the Empire State Building itself creates updraft. When wind hits the side of the building, it's forced upwards, causing anything light that is dropped off the top of the building to blow back up, often landing on ledges outside the upper floors. So your projectile may not even make it to the ground, let alone the soft, gooey folds of a New Yorker's brain. So, what if we remove the effects of air resistance altogether, and encase the entirety of the Empire State Building in an endless vacuum? If this were even remotely possible, and I'm afraid it isn't, the lack of air resistance would allow the penny to reach speeds of around 320 kilometers an hour, or 200 miles per hour. This might be fast enough to cause some injury to the top of the person's head, but fortunately, it still probably won't kill them. Of course, you could simply opt to throw something more aerodynamic off the top of the building. Depending on the design and quality, a ballpoint pen might remain stable enough to zip through the air like a javelin. Scientists have been hard at work on this concept and have predicted a reasonably well-made pen could fall as fast as 320 kilometers an hour under perfect weather conditions, as fast as a penny in a vacuum. Given that the tips of most pens are fairly narrow and made of metal, if one hit the top of your head, death isn't necessarily impossible. Of course, if you're really intent on assassinating someone standing outside the Empire State, stop messing around with pennies and pens and chuck a microwave off the top. Not that we endorse that. We don't. We do not. Oh, and a little fun fact to end on. There's actually a secret 103rd floor above the official top floor. It has a balcony with just a waist-high wall to protect visitors from falling off the edge. I'm afraid it's closed off to the public. Thanks for watching and continuing to support our channel. We work on our videos around our regular job. ओए भाभी के साथ कौन है? अबे नया है क्या? चल बे चल आइयो आइयो कौन है? ओए ओए क्या कर रहा है मेरी बंदी के साथ? है क्या कौन है कौन है लड़का? अरे और मारो दीदी कहाँ हो तुम? बेबी मैं तो घर पे हूँ। झूठ बोल रहे हो ना? मैंने लोकेशन ट्रैक कर लिया है। रेशमा बाहर दिखा रहा है। बेबी तुम्हें पता तो है मेरे घर के पीछे है, तो वही बता रहा होगा। मेरी तबीयत खराब है, मैं तो सो रहा हूँ। सॉरी बेबी, वो पता नहीं मेरे को पता नहीं कैसे लग गया। आप सो जाओ और दवाई ले लेना। के दिन पैग बल्लिए बंदे पंगड़े गद्दी दी डिंगी खोल के नहीं वो मैम ये मनीष जी ने आपके लिए। ये मनीष कौन है? वो नहीं पता। तुम रहने दो, मुझे मत सिखाओ ये। वो कौन है? ये भक्ति क्यों आ रही है? मैं नहीं जानता हूँ। अरे मैं जानता ही नहीं उनको। और ये जो तुम्हें देखेगी इसका क्यों आ रही है? मैं उनको नहीं जानता। ये जी सॉरी ये आपके लिए नहीं था। वो मेरे लिए नहीं था, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। मैं इनको जानता, ये भी मेरे लिए नहीं है। Sobie siedziały, żeby się tam dał ten i ten. Żeby zaczęli tam butem, Maciej. Chyba widzisz jak jedzie? Ten Schumacher, ty vole. Dwójka ma. I stałe? To Starbucksy 5.
To tam stálo, víš? Stálo na stavku. Jako první kolo má celý vrát, to je to většinou. Prostě to i nějak jako, víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vykoněný. To trošku pracuje, takhle. To on je fakt dobré, ale. Jak to tam udrží úplně? No ne, jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo?